Hello Gulshan, hello. And the chat. Hello. The chat before that I'm not able to see. So who's the person who can you just confirm? So let's start the session, people. Yes. Okay, in the meanwhile other students join in, let me just complete the basic formalities, everybody. My name is Ravi Manoram and I'm an alumnus of FMS and DTU, but I decided to follow my passion for literature and hello Ishita. Okay, so I decided to follow my passion for literature and so I'm a writer, so you can Google me out and you'll find me, and I have been an educator for more than 6 years. 7 years is almost there now, within I think a few months more, and I have been training and mentoring MBA aspirants, right, sharing my experiences, teaching them, helping them achieve 99 percentile. Previously I was associated with Time and CL, and I've created many 99 percentiles. You know, they've graduated from IIM, ABC, FMS, Zalari, and I primarily teach all the areas of verbal ability, reading comprehension, verbal reasoning, and for CAT, GMAT and other MBA entrance exams. I also train students for group discussion, interview and personality development, dedication, perseverance, empathy and intellect. These are the values that I'm proud of, and these are the values for which I'm loved and respected. Hello Vinayak, welcome to the session. So yeah, people, please follow me on Unacademy. Just go to the Unacademy app, download it. You know, it's completely free. If they ask you for an invitation code, use my invitation code RAVIFMS, right? And you can also join my Telegram group. So this is the link, or on Telegram, if you just search RAVIMANORAM, you will be able to find me. I share a lot of resources, and today's RC PDF is also uploaded here. So in order to practice, so what we are going to do today is we are going to practice reading comprehension passages. That's what we are going to do today. Yeah, तो ये चीज़ है. चलो आगे बढ़ते हैं. So if you go to my plus course, you'll find some fantastic courses which are already available. Some courses are going on live right now, so you can attend. And if you join my group, I also take a lot of free sessions on Unacademy platform, so you will be able to attend those as well, right? And fantastic people, we've already started with CAT 22 batches, so you can join me here, and final revision batches also going on here. So join our academy, use my code RAVIFMS, you'll get 10% discount, right? And most importantly, I'll be your mentor throughout the entire journey, right? 6 months subscription plan is available at a fantastic discount of discounted price of 16,400, and you can get a further 10% discount if you use my code RAVIFMS. That is the educator code that is being talked about. Yeah, and you can also go for the iconic subscription, right? And 6 months, 12 months and 24 months iconic subscriptions are available, right? And it's a fantastic course. You know, if you join right now, you have to be with us till March 2023. You'll be preparing till then. You know, GDPI and everything will be covered by then, right? And again, if you use my code RAVIFMS, you'll be able to, you know, get the advantage. Yeah, right? And test series has also been launched, people, so you can attempt these test series. They are going on. Today was also one, and 31st of October, 7th of November, again we have fantastic test series, right? And Unacademy has this ask a doubt feature, so you can use that as well, right? So yeah, here. So what we are going to do is we are going to practice some awesome passages, and they are quite difficult as well. And you know, they tell us, and if you practice last year's, you know, fresh, you know, of just the immediate previous few years question, they give us a lot of you know, idea about the kind of questions that are being introduced. And in this session, I'm going to show you some very fantastic kind of questions that you know, CAT has introduced since last year, and how you can handle them and tackle them. I'm going to teach you all of that as well. Okay, so the agenda is, read the passage. Right, once you have done reading the passage, I'll give you some time to read the passage. You can attempt the questions, right?
So just go to the Telegram group here. Just find me here. You'll be able to find me, right? RAVIMANORM. You'll be able to find the PDF. RC Passage 2020 is written there, right? And then we will be practicing all of these questions. How do we handle these critical reasoning questions, and you know, the multiple strategies required for that. We'll be doing all of those things today. Yeah. So that's the plan here, people, today. And yeah, that's the thing. And very interesting ways of asking the questions and all have been introduced. I just wanted to show you some unique questions that were asked. So there are some interesting questions launched in the sense, yeah, so these are some new kind of questions which are launched, you know. Which one of the following statements, if false, could be seen as supporting the argument in the passage? And there's some very new interesting format based questions that have been introduced, you know, since last year, and a huge emphasis on critical reasoning is also there. So people, download the RC passages and start attempting, and I'm pretty confident you'll love them and you'll get to learn a lot from them as well, right? So that's also there. So I'm giving you about 5 to 10 minutes to read the passage, and then I will start explaining the passage. Or let's say 2 or 3 minutes first you go through the passage. Let's see what you have understood. Try and find the main points. I will explain the entire passage, and I will also help you identify the main points and all as well. So all of these things we're going to do today. And then trust me, people, you will have a strategy which is very similar to mathematics. And this is a fantastic passage on politics and social ideology. Should I go about explaining the passage, people? Go to the group and download the PDF of these RC passages, right? And then we start discussing. Chalo, I think I'll start explaining the passage, and then maybe you'll get a fair idea, right? So the word anarchy comes from the Greek word anarchy, meaning contrary to authority without a ruler, right? Contrary to authority or without a ruler, and was used in a derogatory sense until 1940. When it was adopted by Pierre Joseph Proudhon to describe his political and social ideology. Proudhon argued that organization without government was both possible and desirable.
In the evolution of political ideas, anarchism can be seen as an ultimate projection of both liberalism and socialism. Quite an interesting thing. Liberalism भी show करता है and socialism भी show करता है. ठीक है? And the differing strands of anarchism thought can be related to their emphasis on one or the other of these. ठीक है? So anarchy पहले एक बड़ा negative सा concept रखता था, but when Pierre Joseph Proudhon he adopted this particular concept, hello Gulshan, right? Then it became a very different concept, है ना? It started to emphasize on liberalism and socialism, and the differing strands of anarchism thought can be related to their emphasis on one or the other of these, right? तो ये भी है, ठीक है? Historically, anarchism arose not only as an explanation of the Gulf. Good evening, Gulshan. Yeah, I got your message. Hello. Yeah. Historically, anarchism arose not only as an explanation of the gulf between the rich and the poor in any community, and of the reason why the poor have been obliged to fight for the share of a common inheritance. है ना? तो ये भी है. So rich और poor के बीच में divide होती थी, and the poor had to fight for the share of the common inheritance like road, land, water, resources, like है ना? तो ये भी चीज़ है. But as a radical answer to the question what went wrong, that followed the ultimate outcome of the French Revolution. So French Revolution was supposed to be, a revolution of anarchy against bad governance, bad rule by the rulers, right? But the outcome of the French Revolution, which was supposed to be liberal and socialistic in nature, it went wrong. So how did it go wrong? It had ended not only with a reign of terror and the emergence of a newly rich ruling caste, but with a new adored emperor, Napoleon Bonaparte, strutting through his conquered territories. So he walked through his conquered territories and everything, right? So basically the first paragraph's main point then becomes is anarchy was a negative term until it was adopted by Proudhon, and it started to emphasize on liberalism and socialism, right? And then anarchy arose not only as an explanation of so anarchy was a tool which was used by the poor to fight for their common inheritance, and but then something went wrong and it followed the ultimate outcome of the French Revolution, and it had ended not only with a reign of terror. So it ended with a reign of terror. Anarchy ended with a reign of terror. And also the French Revolution ended with a reign of terror, and the emergence of a newly rich ruling class, or rich ruling class emerged in France, right? And but with a new adored emperor as well. So Napoleon Bonaparte was the newly adored emperor there. So that's what the second paragraph is talking about. Just understand what the passages are saying and try and store them in your heads, right? Then the next paragraph says the anarchists and their precursors were unique on the political left. They were unique on the political left, so they were left-leaning, more socialist in nature, in affirming that workers and peasants, grasping the chance that arose to bring an end to centuries of exploitation and tyranny, were inevitably betrayed by the new class of politicians. So the new class of politicians who had emerged, especially after revolution like the French Revolution, they were betrayed by this new class of politicians. They were just interested in power, whose first priority was to re-establish a centralized state power. After every revolutionary uprising, usually one at a heavy cost for ordinary populations. So whenever there was any revolution, there was uprising against the ruling class, it was the ordinary population who had to pay the price. The new rulers had no hesitation in applying violence and terror, a secret police and a professional army to maintain their control. So that's how they intended to rule the ordinary population. So what would be the main paragraph of this paragraph, the main point of this particular paragraph? That no matter what the uprising was, the new ruling class that emerged would use different violent methods and tools to control the ordinary population. That is what this particular paragraph is talking about. Okay? Then the next paragraph says, for anarchists, the state itself is the enemy.
quite an interesting concept, that the state itself is the enemy, है ना? And they have applied the same interpretation to the outcome of every revolution of the 19th and 20th centuries, है ना? This is not merely because every state keeps a watchful and sometimes punitive eye on its dissidents, but because every state protects the privileges of the powerful, है ना? So जो dissidents होते हैं, जो rebel करते हैं, जो disagree करते हैं, they keep an eye on them, है ना? And they also try to protect the privileges of the powerful, right? So that is what, you know, the main point becomes of this particular paragraph, which talks about anarchists. For anarchists, the state itself is the enemy. So whoever is in the government, for anarchists, you know, the government there, you know, it becomes the enemy. And we've seen, you know, the kind of protests happening in the country sometimes, you know, is just to oppose the government no matter what, right? So this is also sometimes it happens, right? So the mainstream of anarchist propaganda for more than a century has been anarchist communism. So you can see anarchism is heavily tilted towards communism, है ना? So that's the mainstream of anarchist propaganda, which argues that property in land, natural resources, and the means of production should be held in mutual control by local communities. So it should be held in mutual control by local communities, federating for innumerable joint purposes with other communes, है ना? So federating for innumerable joint purposes for other communes means everything should be held by the local community, and the federation or the government can use that particular resource for other purposes with other communities or communes and all as well, right? So it differs from state socialism in opposing the concept of any central authority. जो एक टिपिकल सा स्टेट सोशलिज्म होता है या कम्युनिस्ट गवर्नमेंट होती है, वहाँ पे एक सेंट्रल अथॉरिटी होता है, बट एनार्किस्ट का क्या है ना कि दे डू नॉट वांट एनी central authority. What they actually want is that all the resources should be controlled by the local community, and ठीक है, so at the central level you can then allocate that resources to be used by other people as well, and other communities and all as well. So some anarchists prefer to distinguish between anarchist communism and collectivist anarchism. अब इसमें क्या है, this paragraph also talks about the difference between anarchist communism and collective anarchism, है ना? So you can see the kind of passages we get, you know. So this is an example of CAT 2020 passage, you know. In order to stress the obvious desirable freedom of an individual or family to possess the resources needed for living, है ना? So in order to stress the obvious desirable freedom of an individual or family to possess the resources needed for living, while not implying the right to own the resources needed by others, है ना? तो एनार्किस्ट कम्युनिज्म और कलेक्टिव एनार्किज्म में डिफरेंस क्या है? सो फैमिली एंड इंडिविजुअल्स हैव द राइट, है ना, टू पोजेस द रिसोर्सेज नीडेड फॉर लिविंग, है ना, बट दे कैन नॉट ओन, है ना, they cannot own the resources needed by others. So they cannot say, okay, this is my resources, okay, this is supposed to belong to you, but no, we are going to take it from you. So if there, let's say in Assam, if there is an oil well, है ना, so the Assamese have a right to, you know, possess this oil well, है ना, but somebody else, let's say from UP, cannot tell the Assamese, okay, now this oil well kind of belongs to us, है ना. So this is something they cannot do it. So the local people have the right over the local resources. So there are unsurprisingly several traditions of individualist anarchism. One of them deriving from the conscious egoism of the German writer sorry there, है ना. Hello, special for you. I like that name. Anyway, so there's surprisingly several traditions of individual anarchism, one of them deriving from the conscious egoism of the German writer Max Stirner, and another from a remarkable series of the 19th century American figures who argued that in protecting our own autonomy and associating with others for common advantages, we are promoting the good of all. So these thinkers differed from free market liberals in their absolute mistrust of American capitalism and their emphasis on mutualism, right?
So there was this German writer like Max Turner, an individual, and one of them deriving from the conscious egoism. So you should have an ego, but then you should have consciousness about that as well. And another, from a remarkable series of the 19th century American figures who argued that in protecting our own autonomy and associating with others for common advantages, we are promoting the good of all. So we are just looking for autonomy. We are trying to protect our advantages. We are trying to associate with what advantages other people have. So this kind of leads to common advantages. So we are promoting the good of all. And these thinkers differed from free market liberals. So free market liberals who talked about that there should be free market, there should be ownership of resources that are available, and in their absolute mistrust of American capitalism and their emphasis on mutualism as well, right? Okay. So that's what this particular paragraph then talks about. So ये चीज़ है. Let's try and answer the questions, people. See if you can answer the question. If you want to refer to the PDF, people, join the group here, Telegram group, and you will be able to download the PDF from here. From here. So you can simultaneously refer to the passage and you'll be able to answer the questions as well, right? And when you are answering the questions, try and eliminate options, and then try and confirm the answer from the passage as well. Confirm the answer from the passages. So what do you think would be the answer to the first question? Anyone who can help me out here? What would be the answer to the first question? The author makes all of the following arguments in the passage except. So first of all, can I get a couple of answers from you people, and then I'll kind of tell you how to go about answering these questions and all as well. What could be the answer, everybody? Chalo, एक बार देखते हैं how do we go about answering these questions. So the question says the author makes all of the following arguments in the passage except, so all of these arguments have been made in the passage, the one which is not made in the passage, that is what you have to choose. So the only thing you can do here is elimination, right? So when you talk about reading comprehension, there are two kinds of questions. So when you read the question, you will be able to kind of think, okay, this can be the particular answer, right? Sometimes when you read the question, you cannot understand what could be the answer. In that case, the only possible thing that you can do is go through the options and then try and eliminate the options, right? तो कुछ लोग जो है ना शैडो आंसर वगैरह के कॉन्सेप्ट्स वगैरह देते हैं, देखो यार वो सब काम नहीं करता है शैडो आंसर. These are all crappy concepts, right? So the only thing that works here is eliminating the options, right? So question number 1 says the failure of the French Revolution was because of its betrayal by the new class of politicians who emerged from it. So you can see outcome of the French Revolutions, the new class of politicians betrayed by the new class of politicians. See, once you identify the main points, you know exactly where the answer is, and that's where the answer is. So here A is correct. Well, in the CAT exam, of course, you're going to have the questions on the right and you're going to have the passages on the left, and therefore it really becomes very easy to kind of confirm the answers from there and all as well, right? So that's the thing. But in this case, you will have to kind of refer to the PDF or something like that, right? So for anarchists, the state is the enemy because all states apply violence and terror to maintain their control. So the moment you kind of find the main points, that's how you kind of find the answer. So here in the second paragraph, you can see sorry, not in the second, in this paragraph, for anarchists the state itself is the enemy, and here it has said
that they use violent measures to kind of control anarchism, है ना? So from here you can confirm B sentence as well. C then says individualist anarchism is actually constituted of many streams, all of which focus on the autonomy of the individual, है ना? So they are different kinds of anarchism, individual anarchism. Then there's a difference between anarchist communism and collective anarchism. One thing is definitely there, that the individual resources, there has to be an autonomy for that, right? So C also is correct, right? D says the popular perception of anarchism as espousing lawlessness and violence comes from a mainstream mistrust of collectivism, है ना? Collectivism. So basically what D option is saying कि देखो ऐसा है कि anarchism, है ना, इसके बारे में जो perception है, that it espouses lawlessness and violence, that means it promotes lawlessness and violence, it comes from a mainstream distrust of collectivism. जो collectivism जहाँ लोग collect हो जाते हैं together, so the mainstream, they kind of mistrust them. That is essentially what D option is trying to say. ठीक है, तो ऐसा कहाँ लिखा है पैसेज में, पैराग्राफ में, कहीं भी पूरे पैसेज में, that this is the kind of perception that people have because they tend to mistrust collectivism, right? And such you can see in the entire passage it is not mentioned. ठीक है ना? So once you find out the main points, people, it really becomes very easy to kind of confirm the answers from the passage, right? So this is a thing, right? So this then becomes the answer. So this is not given in the passage, so we cannot confirm this. So when it comes to accept, then this becomes an answer. Now let me give you a trick here, a very interesting trick here, people. ठीक है? Now whenever you have questions, in which you cannot figure out the answer after reading the question itself. For example, the author makes all of the following arguments in the passage except इसमें आंसर क्या होगा, मुझे क्या पता, है ना? For such questions, usually आंसर कहीं ना कहीं एंड में ही होता है, ताकि आप जो हैं थोड़ा टाइम लगाए सारे ऑप्शंस को देखने में, है ना? अब इसमें क्या है ना कि by the time you reach option D, ठीक है, right, you would have kind of spent a lot of times, है ना? ठीक है, तो ये चीज़ है ना? तो that's how you're supposed to kind of find the answers in this case. ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस हो तो आप शुरू के ऑप्शंस देखें ही नहीं, सिर्फ आखिरी ऑप्शन देखें और उसके बेसिस पे आप आंसर निकाल लें. That's not what I'm saying. What I'm trying to say basically is कि even if you feel कि कहीं ना कहीं आंसर शुरुआत में है, but still go through all the options till the end, है ना? और अगर शुरुआत में ही लग रहा है कि अरे मतलब ये तो पैसेज में दे रखा है या ये एलिमिनेट नहीं, मतलब अगर ये एलिमिनेट हो सकता है तो प्रोबेबली यू आर करेक्ट, है ना? और जब तक आप आखिरी ऑप्शन में आएंगे तब तक आप जो है ऐसे ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं, है ना? सो दैट्स व्हाट इट इज. अटेम्प्ट करो क्वेश्चन नंबर 2. JBIMS का स्पेशलाइजेशन प्रोग्राम फाइनेंस में भी है ना? HR का भी शायद उन्होंने भी नया लॉन्च किया है स्पेशलाइजेशन प्रोग्राम, है ना? और कुछ एग्ज़ाम शायद जो है महाराष्ट्र CET के अलावा भी उसमें सीट्स फिल होंगे, तो उसको थोड़ा सा देखो, है ना? सो इफ़ यू आर लाइक हार्डकोर समबडी वांट्स टू गेट इनटू फाइनेंस, यू कैन चूज द फाइनेंस प्रोग्राम और यू कैन चूज द HR प्रोग्राम एज वेल. ठीक है, स्पेशल फॉर यू. सर इंग्लिश इम्प्रूव कैसे करें, है ना? इंग्लिश इम्प्रूव ग्रामर से इम्प्रूव कीजिए, है ना? स्पीकिंग से इम्प्रूव कीजिए, है ना? रीडिंग से इम्प्रूव कीजिए, राइटिंग से इम्प्रूव कीजिए, लिसनिंग से इम्प्रूव कीजिए. सो द पॉइंट इज स्टार्ट स्लीपिंग, ड्रीमिंग, ईटिंग, एवरीथिंग इन इंग्लिश. That's the only way out. So basically if you're talking about competitive exams, reading is the only way out, है ना? By virtue of which you can improve your English, है ना? तो ये चीज़ है. Anyway, question number 2, anyone? What could be the answer in this particular case? Passages tough लग रहे हैं people, but यही है CAT का level, है ना? तो CAT 20 की अगर आप बात करेंगे तो ऐसे ही passages ज़्यादातर आते हैं, है ना? तो ये चीज़ है.
Joshna, hello dear. Download the passage from the group people and then you can start attempting them. The passages are all here. So in question number 2, the question says the author believes that the new ruling class of politicians betrayed the principles of the French Revolution, but does not specify in what way did they betray. In the context of the passage, which statement below is likeliest explanation of that betrayal? अब देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें कैसे आंसर करना है, ठीक है ना. अब ये जो क्वेश्चन हमारा दे रखा है, फॉर दिस क्वेश्चन इट इज प्रेफरेबल, है ना, that we go back to the passage and we read about the betrayal of the thing, of the French Revolution. So what went wrong that followed the ultimate outcome of the French Revolution? It had ended not only with a reign of terror and the emergence of new ruling caste, but with a new adored emperor, Napoleon Bonaparte, strutting through his conquered territories. And the anarchists and the precursors were unique on the political left in affirming that workers and peasants grasping the chance that arose to bring an end to centuries of exploitation and tyranny were inevitably betrayed by the new class of politicians, whose first priority was to re-establish a central power after every revolutionary uprising, usually one at a heavy cost for ordinary populations. The new rulers had no hesitation in applying violence and terror, a secret police and a professional army to maintain their control. Okay, right? So that's what we have got, the information here. Now let's see what can be the answer in this particular question, okay? So in the context of the passage, which statement below is likeliest explanation of the betrayal? Once again, people will try and do elimination. Option A says the new ruling class was constituted mainly of anarchists who were against the destructive impact of the revolution on the market. The new ruling class was constituted mainly of anarchists. The ruling class ही जो है mainly of anarchists, they were against the destructive impact of the revolution on the market. That's absolutely wrong, So this is wrong. Okay. D says the anarchists did not want a new ruling class, but were not politically strong enough to stop them. The paragraph does not talk about this as well. The new ruling class struck a deal with the old ruling class. Old ruling class के बारे में तो बात ही नहीं हुई है इसमें. So this is also absolutely wrong, So the new ruling class rose to power on the strength of the workers' revolutionary anger, because it was a movement of anarchism, but then turned to oppress that very class. And as you can see, this particular paragraph emphasizes on the same, what option D tends to say. So this is how you can kind of verify the answer. So answer here then becomes answer here then becomes option D. ठीक है, clear है people? समझ में आया? ठीक है. Let's look at question number 3. Let's try and look at question number 3 here, people. ठीक है. 3 says, which one of the following best expresses the similarity between American individualist anarchists and free market liberals, as well as the difference between the former and latter? Former and latter कौन है? American individual anarchists और free market liberals. इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? कौन सा ऑप्शन इस चीज़ को हाईलाइट करता है? चलो इसे देखते हैं, है ना? So if you see communism, and then there are surprising several traditions of individualist anarchism, one of them deriving from conscious egoism, German writer Max Stirner, and another from remarkable series of 19th century American figures who argued that in protecting our own autonomy and associating with others for common advantages, we are promoting the good of all. These thinkers differed from free markets in their absolute mistrust of American capitalism and in their emphasis on mutualism, है ना? इस पैराग्राफ के बेसिस पे हम लोग जो है इसमें थोड़ा आंसर निकालने की कोशिश करेंगे. तो चलो देखते हैं क्या आंसर हो सकता है इसमें. Both prioritize individual autonomy, which is fair, but the former also emphasizes mutual dependence, है ना? Former कौन सा है?
फ्री मार्केट लिबरल्स भी हैं, है ना, वाइल दी लैटर फॉर्मर कॉन्टेक्स्ट में अमेरिकन इंडिविजुअल एनार्किस्ट्स, है ना, वाइल दी लैटर डू नॉट डू सो. सो फ्री मार्केट लिबरल्स जो हैं इस चीज़ पर एम्फेसाइज नहीं करते हैं. ए सीम्स टू बी राइट. बोथ रिजेक्ट द रेगुलेटरी पावर ऑफ द स्टेट, है ना. डू द फ्री मार्केट लिबरल्स रिजेक्ट द रेगुलेटरी पावर ऑफ द स्टेट? That is not given here in the paragraph, but the former favors of people state while the latter favors state interventions in market. इसके बारे में दिया नहीं है, so we don't know, so this cannot be the answer, है ना. सबसे बड़ी बात यह है कि we cannot go beyond the context of the given passage. पैसेज के context के beyond हम लोग नहीं जा सकते हैं, ठीक है. Both are sophisticated arguments for capitalism, quite an interesting point, है ना, but the former argues for a morally upright capitalism while the latter argue that the market is the only morality, but the market is the only morality, है ना, ठीक है. Now the market is the only morality. Former argues for a morally upright capitalism. Not necessarily, they are not talking about capitalism at all. So see, this is also wrong. D says both are founded on the moral principles of altruism. क्या free market liberals are they created on the moral principles of altruism, है ना. क्या इसके बारे में बात हुई है, ठीक है ना. free market liberals, you know, they have a mistrust for American, you know, these thinkers differed from the free market liberals in their absolute mistrust of American capitalism and their emphasis on mutualism, है ना, ठीक है. तो and violence comes from a mainstream mistrust of collective. Both are founded on the moral principles of altruism, but the latter conceive of the market as a force too mystical for the former to comprehend. इसके बारे में अगेन पैसेज में कहीं बात हुई है जोशना? कहीं भी बात नहीं हुई है ना. देखो, mystical for the other one to kind of believe it, even if the first part seems to be थोड़ा correct, है ना, but free market liberals might not be, you know, emphasizing on the same, ठीक है. लेकिन सेकेंड हाफ तो डेफिनेटली पैसेज में कहीं नहीं दिया हुआ है ना. सो वील हैव टू रिजेक्ट डी ऑप्शन एज वेल, एंड द ओनली ऑप्शन दैट काइंड ऑफ कंफर्म्स विथ द पैसेज इज ऑप्शन ए, एंड देयरफॉर ए देन बिकम्स द राइट आंसर, ठीक है. लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 4. इन द फॉलोइंग सेट ऑफ कॉन्सेप्ट्स, है ना, आइडेंटिफाई द सेट दैट इज कंसेप्चुअली क्लोजेस्ट टू द कंसर्न्स ऑफ द पैसेज, है ना. अब ये कैसा क्वेश्चन है? दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन, है ना, ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना, इन द पैसेज. मतलब किस ऑर्डर में जो आप कहेंगे कि पैसेज के इंफॉर्मेशन के बारे में जो है इसमें बात हुई है, दैट्स व्हाट वी हैव टू टॉक अबाउट, है ना. एनार्किज्म, स्टेट, इंडिविजुअल फ्रीडम, ठीक है. एनार्किज्म, है ना, स्टेट के बारे में भी बात हुई है यहाँ पे, है ना. एंड देन इंडिविजुअल एनार्किज्म के बारे में बात हुई है ना. डिजायरेबल फ्रीडम फॉर एन इंडिविजुअल फैमिली टू पोजेस एंड ऑल, है ना. ये सब चीज़ों के बारे में बात हुई है ना. सो फोर्थ, एनार्किज्म, स्टेट, इंडिविजुअल फ्रीडम. अभी थोड़ा सा ये जो है सही लग रहा है, ठीक है. इफ यू लुक एट बी, रेवोल्यूशन, स्टेट, स्ट्राइक एंड ईगोइज्म, है ना. ईगोइज्म की बात तो शुरुआत में ही हुई थी, है ना. सॉरी, ईगोइज्म की बात नहीं हुई है. इट्स जस्ट दैट दे आर रेफरिंग टू फ्रॉम द कॉन्शियस ईगोइज्म ऑफ द जर्मन राइटर मैक्स टर्नर, है ना, राइट. सो इसमें और रेवोल्यूशन की भी बात नहीं हुई. एनार्किज्म एंड रेवोल्यूशन आर टू डिफरेंट थिंग, है ना. सो वी हैव अ डाउट अबाउट ऑप्शन बी. रेवोल्यूशन, स्टेट, प्रोटेक्शन एंड लिबरल्स. प्रोटेक्शन, who will offer the protection? The state. But the anarchists are against the state itself. So we have a doubt about this answer as well. Anarchism, betrayal, अच्छा चलो, power and state. But then there are many other concepts like individual freedom और ये सब चीज़ें जो है वो बात नहीं हुई है इसमें, है ना. So this is very limited. Maybe 50% of the passage kind of follows this particular order, right? So once again in this question, है ना, so the best answer then becomes is A. ठीक है, the best answer here then becomes is A. चलो, many people, अच्छा चलो, क्वेश्चन नंबर 5 भी है इसमें. According to the passage, what is the one idea that is common to all forms of anarchism, है ना. They all derive from the work of Pierre Joseph Proudhon, ठीक है.
अब देखो ए ऑप्शन करेक्ट क्यों होगा, क्योंकि एनार्किज्म पहले नेगेटिव था, बट पियर जोसेफ प्रॉडन ही गेव इट अ मेन स्ट्रीम आइडिया, यू नो काइंड ऑफ कनेक्टिंग इट टू लिबरलिज्म एंड सोशलिज्म, ठीक है। तो ए थोड़ा करेक्ट लग रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग अभी और ऑप्शंस को देखेंगे, ठीक है। अच्छा, वेदर दे ऑल डिराइव फ्रॉम द वर्क ऑफ पियर जोसेफ प्रॉडन, ये थोड़ा सा गलत भी हो सकता है, क्योंकि अनदर राइटर भी है, वन ऑफ देम डिराइविंग फ्रॉम द कॉन्शियस इगोइज्म ऑफ जर्मन राइटर, है ना। सेवरल ट्रेडिशंस में एक ट्रेडिशन ये भी है, फिर दूसरा है क्या कि अमेरिकन फिगर्स से भी आया, 19th सेंचुरी अमेरिकन फिगर से भी कुछ लोगों ने इंस्पिरेशन ली है। सिद्धार्थ, गुड इवनिंग माय डियर, आज थोड़ा लेट हो गए, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ए इज नॉट इंटायरली करेक्ट भी है ना। तो थोड़ा सा देखो, मैंने बाकी सोचा तो मुझे थोड़ा सा ये गड़बड़ लग रहा है। दे आर ऑल अपोज टू सेंट्रल पावर ऑफ द स्टेट, ये तो डेफिनेटली करेक्ट है यहाँ पे। They all focus on the primacy of the power of the individual. Not all. Individual anarchists. There is no idea common to all forms of anarchism. That is why it is anarchic. ठीक है? That's also wrong. One thing that is common is centralization of power in the state. इस चीज को तो सभी oppose करते हैं, and therefore B would then become the right answer. है ना? तो ये भी है. ठीक है? Don't worry, Siddharth. You've not missed much. है ना? Join the group. You can download the PDF and then start attempting passage 2. और फिर इसको देखते हैं। फैमिली फंक्शन कोई बात नहीं, ठीक है ना। जहां से शुरू करेंगे वहीं से शुरू करेंगे, कोई टेंशन नहीं। Let's try and do this question, people. रात तक क्लास लेते रहते ना थोड़ी सी थकान हो जाती है। मुझे लगता है कि यूट्यूब सेशंस को ना दिन में शिफ्ट करना पड़ेगा। 12 o'clock, हाउ डज 12 o'clock साउंड? कुड बी गुड। PDF डाउनलोड करके अगर साइड में कंपेयर करके देखोगे तो इट वुड बी बेटर। मे बी लैपटॉप में इसको खोल लो और साइड में कर लो, है ना।
डिस्कशन चालू करें, डिस्कशन चालू करें। चलो देखते हैं पैसेज। Few realized that the government of China, governing an empire of some 60 million people during the Tang dynasty 618 to 907, है ना, implemented a complex financial system that recognized grain, coins and textiles as money, है ना, complex financial system, है ना, Tang dynasty, है ना, governing government of China then, है ना, which was Tang dynasty, they were ruling over 60 million people, but 60 million people is not the important information here. तो complex financial system क्या था कि grain, coins and textiles as money, तो अपना तुरंत जो है perception change करना पड़ेगा, है ना, कि मतलब थिंकिंग चेंज करना पड़ेगा। तो अब इसमें पैसा क्या है, ग्रेन, कॉइन, टेक्सटाइल्स, मतलब कपड़ा दो और बदले में या तो कपड़ा लो या खाना लो या लकड़ी लो या कुछ भी लो, है ना। सो व्हाट इज मनी, बाय द वे, मनी इज जस्ट अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज उसमें क्या था, ग्रेन था, कॉइन्स था, टेक्सटाइल्स था, है ना। इंटरेस्टिंग, कॉइन्स मतलब एक तरह का बार्टर सिस्टम था, बट एक कंप्लीट बार्टर सिस्टम नहीं था, मतलब एक स्टैंडर्डाइजेशन थी ग्रेन्स, कॉइन्स और टेक्सटाइल्स में, है ना, राइट। दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग इट मनी। अगर स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होता तो ये एक सिंपल सा एक बार्टर सिस्टम होता, है ना। सो कॉइन्स डिड हैव सर्टेन एडवांटेजेस, दे वर ड्यूरेबल, है ना, recognizable and provided a convenient medium of exchange, है ना। तो कॉइन के तो एडवांटेजेस थे, स्पेशली फॉर स्मॉलर ट्रांजैक्शंस। तो स्मॉलर ट्रांजैक्शंस के लिए कॉइन्स का एडवांटेज था, है ना। उस जमाने के बारे में बात हो रही है, आज के हिसाब से मत सोचना, ठीक है। However, there were also disadvantages. इसके disadvantages भी थे। A continuing shortage of copper meant that government mints could not produce enough coins for the entire empire, है ना। तो कॉपर की शॉर्टेजेस होती थी, इनफ कॉइन्स जो हैं प्रोड्यूस नहीं हो पाते थे, टू द एक्सटेंट दैट फॉर मोस्ट ऑफ द डायनेस्टी हिस्ट्री कॉइन्स कंस्टिट्यूटेड ओनली अ 10th ऑफ द मनी सप्लाई। तो कॉइन्स जो थे इट ओनली कंस्टिट्यूटेड ओनली अ 10th ऑफ मनी सप्लाई। तो अब एक्सचेंज वैल्यू के लिए हम लोग क्या करें, है ना। सो वी हैव टू यूज समथिंग एल्स, राइट। So one of the main objections to calls for taxation to be paid in coin was that peasant producers who could weave cloth or grow grain, the other two major currencies of the Tang dynasties, would not be able to produce coins and therefore would not be able to pay their taxes, है ना। तो ये जो गरीब लोग थे, पुअर मतलब peasant वगैरह जो थे, farmers थे, है ना, peasant producers, अब कॉइन इतनी ज़्यादा मार्केट में है ही नहीं, तो फिर ये टैक्सेस कैसे देते हैं, है ना, वो एक प्रॉब्लम था। सो बेसिकली इस पैराग्राफ का मेन पॉइंट क्या हो जाएगा पीपल, that during the Tang dynasty, grain, coins and textiles, you know, they were used as money. And then it says, you know, कि copper का shortage was a problem, because of which coins which were used for small transactions were not feasible, and only a 10th of the money supply constituted of coins, है ना। And the main reason for main objection to call for taxes to be paid in coin was the peasant one of the main objections. अब क्या टैक्सेस अब तुम पे करोगे तो किस में पे करोगे, पैसे में पे करोगे, नोट, आज के ज़माने में हम लोग नोट में पे करते हैं या बैंकिंग ट्रांजैक्शन में करते हैं, उस ज़माने में कॉइन में करते, लेकिन कॉइन में करते कैसे, कॉइन की सप्लाई तो थी नहीं, है ना। तो सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन या प्रॉब्लम या हिंड्रेंस क्या थी टैक्स पे करने में, कि जो बेचारे गरीब फार्मर्स थे, पीजेंट प्रोड्यूसर्स थे, है ना, who could weave cloth or grow grain, उनके पास तो करेंसीज नहीं थी, है ना, बट उनके पास मेजर करेंसी क्या थी, क्लॉथ था और ग्रेन था, है ना, बट दे वुड नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस कॉइन्स, है ना, कॉइन में वो टैक्सेस नहीं दे पाएंगे, देयरफॉर वुड नॉट बी एबल टू पे देयर टैक्सेस। तो फिर जो टांग डायनेस्टी में गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा कि ग्रेन और कॉइन्स को भी जो है, ग्रेन और टेक्सटाइल्स को भी जो है वो एज अ मनी उनको जो है क्रिएट करना पड़ा, ठीक है। सो दैट इज द मेन पॉइंट ऑफ दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ। So as coins had advantage and disadvantages, so did textiles, है ना। कॉइन के एडवांटेजेस थे, डिसएडवांटेजेस थे, तो टेक्सटाइल्स के भी। अब टेक्सटाइल का क्या था एडवांटेज डिसएडवांटेजेस को देखते हैं। If in circulation for a long period of time, they could show signs of wear and tear, है ना। तो कपड़े हैं भाई, तो फटेगा ही, है ना, वेयर आउट भी करेगा, फेड कर जाएगा, है ना। Stained, faded and torn bolts of textiles had less value than a brand new bolt. अब जो पुराने कपड़े हो गए उसको कौन वैल्यू करेगा, कोई नहीं करेगा,
बहुत कम लोग उसको वैल्यू करेंगे, है ना, राइट। तो अब इसमें होता क्या था कि ब्रांड न्यू बोल्ट की जो है वैल्यू ज़्यादा होती है। व्हाट इज बोल्ट? लाइक यू नो अ रोल ऑफ क्लॉथ यू कैन से। फर्दरमोर अ फुल बोल्ट हैड अ पर्टिकुलर वैल्यू। फुल बोल्ट यानी अगर फुल है तो उसका एक पर्टिकुलर वैल्यू था, लेकिन अगर तुम कपड़े को काट दोगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, है ना। सो इफ कंज्यूमर्स कट टेक्सटाइल्स इनटू स्मॉल पीसेस टू बाय और सेल समथिंग वर्थ लेस देन अ फुल बोल्ट, है ना, दैट टू ग्रेटली लेसन द वैल्यू ऑफ टेक्सटाइल्स, है ना। तो जो कटे हुए कपड़े थे उनकी वैल्यू कम हो जाती थी, है ना। अनलाइक कॉइन्स, टेक्सटाइल्स कुड नॉट बी यूज्ड फॉर स्मॉल ट्रांजैक्शंस, है ना। टेक्सटाइल को तो इसीलिए अब हम लोग छोटे मोटे ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ नहीं कर सकते थे, पूरा का पूरा, है ना, बोल्ट हमें यूज़ करना था। हिंदी में क्या बोलेंगे वो जो पूरे एक नहीं होता रोल, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन दोस शॉप्स जहाँ पर वो कपड़े का पूरा ऐसा रोल जैसा लगा रहता है। सो दैट्स लाइक अ बोल्ट, यू नो, ह्यूज बोल्ट। इमेजिन इफ यू कट इट इनटू पीसेस, है ना, तो पीसेस की वैल्यू कितनी होगी। अब किसी छोटे बच्चे के लिए अगर तुमने छोटा सा पीस काटा, उसका मैं क्या करूँगा, है ना, उसका तो मैं शर्ट भी नहीं बना सकता, बनियान भी नहीं बना सकता, राइट। उसके मैं कुछ उस ज़माने में उसका तुम कोई यूज़ भी नहीं कर सकते थे, है ना, राइट। सो अनलाइक कॉइन्स, टेक्सटाइल्स कुड नॉट बी यूज्ड फॉर स्मॉल ट्रांजैक्शंस। As an official noted, textiles could not be exchanged by the foot and the inch. तो एक फुट क्लॉथ या एक इंच क्लॉथ से तुम क्या करोगे, कुछ एक्सचेंज करोगे, नहीं करोगे, है ना। टेक्सटाइल की तो वैल्यू उसी में है कि तुम उससे कोई ना कोई मतलब शर्ट बनाओ या ट्राउजर्स बनाओ या कोट बनाओ या बेडशीट बनाओ, है ना। अगर छोटे छोटे पीसेस काट दोगे तो क्या करोगे, सबको जोड़ के क्या तुम एक बेडशीट बनाओगे, है ना, तो यूजलेस था। सो दिस पैराग्राफ टॉक्स अबाउट द डिसएडवांटेजेस ऑफ टेक्सटाइल्स एज मनी and the fact that you cannot use it, है ना, for small transactions. That's what this particular paragraph is talking about, है ना. Then the next paragraph says, but textiles had some advantages over coins. अच्छा भैया, तो textile के advantage भी थे coins के ऊपर, है ना. For a start, textile production was widespread and there were fewer problems with the supply of textiles, है ना. तो textile के supply में problem भी कम थी, है ना, क्योंकि textiles were present in abundance. Peasants were also producing, है ना, cloth, right. For large transactions, textiles weighed less than their equivalent in coins, since a string of coins could weigh as much as 4 kg. अब सिक्के जो हैं वो तो भारी होंगे, अगर तुम जो है 10-20 सिक्के तुम अगर इकट्ठे कर लो तो वो 4 kg के भी वेट हो सकते हैं। आज के ज़माने का सिक्का मत समझो, उस ज़माने में बड़े बड़े सिक्के होते थे, थोड़े हेवी सिक्के होते थे, राइट। Furthermore, the dimensions of a bolt of silk held remarkably steady for the 3rd to the 10th century, है ना। सिल्क जो है वो लास्ट भी कर जाता था, ये भी एडवांटेज था। 56 centimeters wide and 12 meters long. The value of different textiles were also more stable than the fluctuating value of coins. अब टेक्सटाइल की जो वैल्यू है वो तो स्टेबल होती थी, कॉटन का वैल्यू अलग है, सिल्क की वैल्यू अलग है, रेयन तो खैर मॉडर्न डे का है, उस ज़माने में जो भी है और भी जो टाइप के होंगे, है ना, क्लॉथ हो गया तो उसकी वैल्यू, जूट है तो उसकी वैल्यू अलग होगी, है ना। कॉइन्स की तो वैल्यू जो है वो फ्लक्चुएट करते रहती है ना। सो दिस पैराग्राफ टॉक्स अबाउट द इंपॉर्टेंस एडवांटेजेस ऑफ टेक्सटाइल्स ओवर कॉइन्स, है ना। नाउ द नेक्स्ट पैराग्राफ सेज द गवर्नमेंट आल्सो रिक्वायर द यूज ऑफ टेक्सटाइल्स फॉर लार्ज ट्रांजैक्शंस। गवर्नमेंट भी रिक्वायर करते थे कि भैया ऐसा है कि लार्ज ट्रांजैक्शंस के लिए अगर यूज करना है तो टेक्सटाइल यूज करेंगे, है ना। दैट्स व्हाट इट यूज्ड टू से। कॉइन्स ऑन द अदर हैंड were better suited for smaller transactions, है ना। तो coins जो है smaller transactions के लिए यूज होती थी, and possibly given the costs of transporting coins for a more local usage, है ना, given the cost of transporting coins for more local usage, है ना, and grains became, because it rotted easily, was not used nearly as much as coins and textiles. So coins और textiles ज़्यादा यूज होता था, grains उतने ज़्यादा यूज नहीं होते थे, but taxpayers were required to pay grain to the government as a share of the annual tax obligation. बेचारा गरीब पीजेंट है, फार्मर है, वो कहाँ से टेक्सटाइल लेके आएगा अगर वो प्रोड्यूस नहीं करता है, कॉइन कहाँ से लेके आएगा, तो वो तो ग्रेन में ही टैक्सेस पे करता था। एंड ऑफिशियल सैलरीज वर एक्सप्रेस्ड इन वेट्स ऑफ ग्रेन। अब ग्रेन को तुम ज़्यादा दिन तो स्टोर कर नहीं सकते, तो अब ऐसा है कि जो ऑफिशियल्स हैं उनको सैलरी हमें कैसे देनी है, ग्रेन में हमने दे दिया उनको, है ना। तो ग्रेन वो लेके जाएंगे, खाएंगे उसको, तो है ना। तो इस तरह से भी, मे बी नॉट इंटायरली बट पार्ट ऑफ द सैलरी कुड मे हैव बीन द फैक्ट दैट दे वर पेइंग विद ग्रेन्स, है ना। नेट इशू इन माय एरिया, कोई बात नहीं जोशना, इट्स ओके, ठीक है, जितना हो सके उतना करेंगे। अदरवाइज यू कैन ऑब्वियसली वॉच द रिकॉर्डेड सेशन, है ना। सेम लिंक को यूज़ करना है, यू कैन वॉच द रिकॉर्डेड सेशन ऑफ दिस यूट्यूब सेशन एज वेल, है ना। सो इन एक्चुअलिटी, है ना, और करेंसी सिस्टम टुडे हैज़ सम सिमिलैरिटीज
इवन एज इट इज़ चेंजिंग इन फ्रंट ऑफ आवर आईज. वी हैव कैश कॉइन्स फॉर स्मॉल ट्रांजेक्शंस. तो कैश सिक्के नोट्स वगैरह क्या है, छोटे मोटे ट्रांजेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, लाइक पेइंग फॉर पार्किंग एट अ मीटर एंड बैंकिंग नोट्स फॉर अदर आइटम्स, है ना, बैंक नोट्स फॉर अदर आइटम्स, एंड चेक एंड डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड फॉर अदर्स, है ना, ऑफन लार्ज टाइप ऑफ पेमेंट्स, है ना. At the same time, we are shifting to electronic banking and making payments online. Electronic banking भी जो बड़े बड़े transactions के लिए हम electronic banking use कर लेते हैं, है ना. Some young people never use cash and do not know how to write a check, है ना. लेकिन young people सब जो है वो लोग they don't use cash and they do not know how to write a check, है ना. तो ये चीज़ है, ठीक है. समझ में आया पैसेज? ये तो easy था, है ना, worth doing. जो देखते हैं questions, है ना, अब इसमें क्या आंसर होगा. During the time period, which one of the following would not be an economically sound decision for small purchase at the local market that is worth 1/8 of a bolt of cloth? इनमें से कौन सा चॉइस जो है इकोनॉमिकली साउंड डिसीजन नहीं होगा फॉर अ स्मॉल परचेस इन द लोकल मार्केट विच इज वर्थ 1/8 ऑफ अ बोल्ट ऑफ क्लॉथ? एकदम सिंपल लॉजिकल सा. इसमें भी एकदम आपको एलिमिनेशन यूज करना है. जल्दी से मुझे बता दो आंसर क्या होगा एवरीबडी, क्या आंसर होगा इसमें? बड़ा इजी सा क्वेश्चन है. अच्छा भाई, कैट 2020 जो है ना, एक बड़ा यूनिक सा चीज़ देखा गया था. 8:30 AM से क्लास स्टार्ट हुई थी एंड एग्जाम स्टार्ट हुए थे एंड इट वेंट ऑन आई थिंक टिल 6 PM, है ना, 3 स्लॉट्स में. 5:30 to 6 के आसपास चला था, आई थिंक 6 और 5:30 to 6 या 6 के बाद भी शायद चला था. सुबह का जो स्लॉट था उस समय क्वेश्चंस काफ़ी ईजी थे. दोपहर का स्लॉट, शाम का स्लॉट में क्वेश्चंस डिफिकल्ट होते गए, है ना. सो पीपल, अगर सुबह का स्लॉट मिलता है तो डरना नहीं है, हो सकता है आपके फायदेमंद हो, फायदे के लिए हो. शाम का स्लॉट मिले तो आप कंफर्टेबल हो गए, माइंड फ्रेश होगा उस समय, लेकिन क्वेश्चंस थोड़े डिफिकल्ट भी आ सकते हैं. अरे तरुण, इतनी बार आंसर चेंज कर लिया. गगनेश, गगनेश सी आंसर है आपके हिसाब से. तरुण, क्या बी है आंसर? क्या है आंसर इसका? सो मेकिंग द पेमेंट्स विद द एप्रोप्रिएट वेट ऑफ ग्रेन. ग्रीन तो वैसे भी खराब हो जाती है, सो ग्रीन वॉज नॉट हैवीली यूज्ड, है ना, ठीक है. देन इट सेज पेइंग विद अ फेडेड बोल्ट ऑफ क्लॉथ दैट हैज अप्रोक्सीमेटली द सेम वैल्यू. फेडेड कौन पसंद करेगा, उसको तो कोई यूज करेगा ही नहीं, है ना. यूजिंग कॉइन्स इश्यूड बाय द गवर्नमेंट टू मेक द पेमेंट, है ना. Cutting 1/8 of the fabric from a new bolt to pay the amount. People, you are forgetting one thing. The question is saying would not be an economically sound decision. इनमें से कौन सा एक अच्छा डिसीजन नहीं होगा? सॉरी, तो इसमें क्या है, वेट अगर तुम ग्रे में पे कर रहे हो एज कम्पेयर टू 1/8 ऑफ द फैब्रिक, कपड़े को काटने से क्या होगा, उसकी वैल्यू तो कम हो जाएगी ना. पैराग्राफ में दिया भी, पैसेज में दिया भी है. तो ठीक है, ग्रेन इज द लीस्ट प्रिफर्ड बट देन इट इज एटलीस्ट बेटर देन डी, है ना. देखो एलिमिनेशन का कितना बड़ा फायदा होता है ना. अब क्या है कि चलो फेडेड बोल्ट ऑफ क्लॉथ की वैल्यू कम हो जाती, पर ये एटलीस्ट कटे हुए कपड़े से तो बेटर है ना. तो अब इस केस में क्या है कि तुम बी से तुम पे कर दो तो ठीक है, छोटे अमाउंट्स के लिए कॉइन भी चलेगा, है ना, राइट. लेकिन भैया कपड़े नहीं काटने. अब देखो, द मोमेंट यू रीड ऑल दी ऑप्शंस, पहले मेरा भी परसेप्शन क्या था कि यार ग्रीन में क्यों दोगे पैसे, फेडेड कपड़ा में क्यों दोगे, कॉइन तो ठीक है चलेगा, है ना, राइट. बट हाँ, द वर्स्ट ऑप्शन हियर इज कि एक अच्छा खासा बोल्ट को काट दिया तुमने 1/8 पीस में और तब तुम पे कर रहे हो, है ना. दिस इज द वर्स्ट ऑप्शन, है ना. सो वुड नॉट बी एन इकोनॉमिकली साउंड डिसीजन. तो डी इज द बेस्ट आंसर. तरुण, आपका आंसर पहले सही था, है ना. गगनेश, यस, यू वाज चेंज द आंसर, है ना, ठीक है. तो ये चीज़ है. क्वेश्चन ठीक से पढ़ो पीपल, बहुत ज़रूरी होता है क्वेश्चन ठीक से पढ़ना, है ना. क्वेश्चन नंबर 7, एकदम देखो मैं एकदम स्टूडेंट के जैसा ही बिहेव कर रहा हूँ अभी कि कैसे कैसे होगा. अब स्टूडेंट के जैसा है ना कि तुमको लगे यार ग्रेन में क्या पे करना, नहीं करना, इसको तुरंत. एक तो पहले तो लोग क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ते हैं. इकोनॉमिकली वायबल क्या होगा कि चलो इसमें ही उन्होंने कर दिया पेमेंट, है ना, तो बी या सी में से ऑप्शन चूज कर लिया. जैसे अभी गगनेश ने सी ऑप्शन चूज किया, भाई कॉइन में कर दो. लेकिन सिस वुड नॉट, अगर वुड नॉट है तो ग्रेन कभी कभी चूज कर लेंगे. बट द मोमेंट यू स्टार्ट एलिमिनेटिंग तो आंसर एकदम क्लियर कट हो जाता है. अच्छा भैया ये आंसर है. एलिमिनेशन इज अ की, है ना. जैसे वो कौन सी प्रोड्यूसर थी, वो एकता कपूर कहती है ना कि 3 चीज़ हमें जो चाहिए किसी भी सीरीज, टीवी सीरियल या मूवी को सक्सेसफुल होने के लिए, वो 3 चीज़ क्या है?
एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। तो वो तीन चीज क्या है भैया VARC में अच्छा करने के लिए? वो है एलिमिनेशन, एलिमिनेशन, एलिमिनेशन। Sir, I confuse that the value would further depreciate or fade it, so that might not be economic. अच्छा हाँ, लेकिन कपड़े को काटने से तो बेटर है ना, क्योंकि कटा हुआ कपड़ा इसका बहुत लिमिटेड यूज होता है ना, तो ये चीज है, ठीक है। Let's look at question number 7, people. When discussing textiles as currency in the time period, the author uses the word steady and stable to indicate all of the following except, मतलब जो ये indicate नहीं करता है, reliable transportation, reliable quality, reliable measurement, reliable supply। पहले आप लोग बताइए जरा आंसर क्या होगा। आप तो कुछ आंसर देने वाले लोग भी आ गए, पता नहीं शुरू में तो कुछ आंसर देने वाले लोग भी नहीं थे, है ना। क्या हो सकता है इसमें आंसर पीपल, व्हाट डू यू थिंक? हाँ, इसमें जवाब क्या हो सकता है? गगनेश, ओके, और क्या? तरुण, सिद्धार्थ, सी, अकॉर्डिंग टू सिद्धार्थ, अकॉर्डिंग टू गगनेश ए। तरुण, तुम्हारे हिसाब से क्या होगा आंसर? अब ऐसा है ना, वापस चलते हैं, ठीक है। ये स्टेडी एंड स्टेबल कहां यूज हुआ है? फॉर स्टार्ट टेक्सटाइल्स फॉर द लास्ट टेक्सटाइल, बोल्ट ऑफ सिल्क हेल्ड रिमार्केबली स्टेडी, है ना, from the 3rd to the 10th century, this thing, and the value of different textiles were also more stable than the fluctuating value of coins, ठीक है ना, ये दिया है ना। अब यहां से जो है अब हमारा आंसर क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। अब सोचो आंसर क्या होगा। तो अगर ये टेक्सटाइल 3rd सेंचुरी टू दी 10th सेंचुरी, अगर ये सिल्क जो है इतने दिनों तक टिका है ना, लास्ट कर रहा है, ठीक है, राइट, तो क्वालिटी अच्छी होगी ना, है ना। स्टडी का मतलब क्या है इसमें, है ना, कि उसका डायमेंशन फिक्स था, है ना, सिल्क, है ना, इट रिमार्केबली स्टडी, श्रंक नहीं किया या कुछ नहीं किया, सो इट वाज देयर, है ना। तो वो भी है, सप्लाई मेजरमेंट भी है ना। और क्लॉथ के बारे में तो बात हुई है कि सप्लाई भी जो है वो ठीक था, है ना, राइट, ठीक है। तो सप्लाई में भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि पीजेंट्स वर प्रोड्यूसिंग सप्लाई। अभी कहीं कहीं बात हुई थी सप्लाई के बारे में, है ना, सप्लाई, अच्छा ये देखो ऊपर में फ्यूअर प्रॉब्लम्स विद सप्लाई ऑफ टेक्सटाइल्स, है ना, यहाँ भी बात हुई है, ठीक है। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन से इसका क्या लेना देना, ठीक है, ऑन द कॉन्ट्ररी, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन तो मतलब अगर ज़्यादा अमाउंट होता तो कॉइन्स में ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा दिक्कत होती, पर इसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी, है ना। सो स्टेडी एंड स्टेबल आर यूज इन द सेंस ऑफ क्वालिटी, मेजरमेंट, सप्लाई, यस, बट ट्रांसपोर्टेशन के सेंस में यूज नहीं हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन के सेंस में यूज नहीं हो रहा है, ठीक है। सो आंसर हियर इज ए, है ना, तो ये चीज है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज, which one of the following can be inferred with regard to the use of currency during the time era? Inferred का मतलब क्या है पीपल? Inferred का मतलब क्या है? ज्यादातर लोग जो है inferred का मतलब जो है गलत निकालते हैं। For the purpose, देखो inferred का मतलब कुछ भी हो सकता है लिटरेचर में। Infer क्या किया, deduce क्या किया, derive क्या किया, है ना, conclude क्या किया, कुछ भी हो सकता है लिटरेचर में। एग्जाम पर्पस के लिए बाबा सिर्फ एक ही डेफिनेशन याद रखने का है, व्हाट मस्ट बी ट्रू, है ना, व्हाट मस्ट बी ट्रू बेस्ड ऑन द गिवन पैसेज, ठीक है बॉस, बस यही याद रखने का है, ठीक है। एकदम प्रैक्टिकल, है ना, डुएबल स्ट्रैटेजी बताऊंगा, कुछ भी, है ना, मस्ट बी ट्रू बोल लो या नेसेसरीली ट्रू बेस्ड ऑन द गिवन पैसेज, है ना, तो ये आंसर है। अरे डिडंट रीड एक्सेप्ट सर, अरे सिद्धार्थ
ये छोटे छोटे वर्ड्स ही ना पूरा गेम चेंज कर देते हैं, है ना। तो बड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा, है ना। जैसे कबीर साहब का दोहा है ना, देखन में छोटन लगे पर घाव करे गंभीर, है ना। तो वो चीज़ है। तो 8 का आंसर क्या होगा बताओ। तरुण सेज डी, गगनेश सेज सी। इंटरेस्टिंग, है ना। In the context of the passage, all of these must be true, है ना, with the use of the currency during the Tang era. Currency had deteriorated easily. Currency that deteriorated easily was not used for official work, है ना। कपड़े हैं, ग्रेन्स हैं, ठीक है ना। तो ठीक है, राइट। तो that's what this option is saying, है ना। Copper coins were more valuable and durable than textiles. Grains were the most used currency because the government requirements, है ना। Currency usage was similar to that of modern times, ठीक है ना। अच्छा, can be inferred what must be true. अब पैसेज में कहाँ लिखा है कि currency that deteriorated easily was not used for official work, है ना। कहीं लिखा है? All that it says कि चलो भैया टेक्सटाइल deteriorate कर जाता था, ग्रेन्स रॉटन हो जाते थे, लेकिन ऑफिशियल वर्क के लिए तो हो रहा था ना, सैलरी को ग्रीन्स में ये पे कर रहे थे, है ना। अरे कौन सा क्वेश्चन था, 8 था, सॉरी। कॉपर कॉइन्स वर मोर वैल्यूएबल एंड ड्यूरेबल देन टेक्सटाइल्स, ठीक है। ऑन द कॉन्ट्ररी द पैसेज सेज कि भैया टेक्सटाइल्स वर प्रेफर्ड एज कंपेयर टू कॉपर, एज कंपेयर टू कॉइन, है ना, राइट। तो ऐसा है कि बी भी करेक्ट नहीं है। ग्रेन्स वर द मोस्ट यूज करेंसी, ये तो बिल्कुल ही वाहियात सा ऑप्शन है। बेस्ट आंसर क्या है इसमें? डी है ना। गगनेश, what must be true based on the given passage? Right? Grains were not the most used because it was perishable, right? That is the thing. Question number 9 देखते हैं। According to the passage, modern currency system shares all of the following features with that of Tang. Modern currency system shares all of the following features with that of Tang except, यानी जो फीचर कॉमन नहीं है वो आंसर है, ठीक है ना। तो क्या होगा इसमें आंसर 9th का एवरीबॉडी? सिद्धार्थ, दैट आंसर इज फॉर 9th। गगनेश, दैट आंसर नहीं, आई थिंक वो प्रीवियस था ना। अब इसमें क्या आंसर होगा पीपल? 9th में क्या आंसर होगा? 9th में क्या आंसर होगा पीपल? Tarun says B. What about others? हाँ जी, others, गगनेश, सिद्धार्थ, और कोई है? Anyone else? गगनेश says D. Interesting. What about others? क्या आंसर होगा इसमें? What do you think? उत्तर क्या होगा? सिद्धार्थ, यहां देखो ना, कॉइन्स फॉर स्मॉल ट्रांजैक्शन, है ना, बैंक नोट्स, है ना, ये भी है, चेक, डेबिट कार्ड्स। तो अरे यार कहाँ गया वो क्वेश्चन? हाँ, तो डिफरेंट मटेरियल हुआ ना, क्रेडिट कार्ड अलग है, नोट अलग है, सिक्के अलग हैं, डिफरेंट करेंसी भी है, छोटे मोटे के लिए 10 रुपये 100 रुपये करेंसी, है ना। तो ये भी था, राइट। इट्स currencies fluctuate in value over time, ये भी सही है। It is undergoing transformation, ठीक है। पुराने जमाने में ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ था करेंसी सिस्टम का, है ना। देखो करेंसी सिस्टम की बात हो रही है। पुराने जमाने में क्या था? ग्रेन्स, कॉइन्स, टेक्सटाइल्स, यही यूज हो रहे थे। बट इज नॉट करेंसी, करेंसी इज स्टिल सेम सर। अरे पापा, करेंसी सिस्टम की बात हो रही है, करेंसी जो सेम है, करेंसी सिस्टम तो थोड़ा बदल रहा है ना। नहीं बदलता रहता है करेंसी सिस्टम।
1000 2000 के डिनोमिनेशंस आ गए, फिर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होने लग गए, है ना। तो ये सब चीज़ें तो ये मॉडर्न डे में है ना। चलो ठीक है, डी में लेट्स से कि स्टेबल है या चेंज है या जो भी हो रहा है, द पॉइंट इज द ऑथर इवन टॉकिंग अबाउट अंडरगोइंग द ट्रांसफॉर्मेशन। वैसे थोड़ा बात तो हो रहा है इसके बारे में, है ना। एट द सेम टाइम वी आर शिफ्टिंग टू इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग एंड मेकिंग पेमेंट्स ऑनलाइन, तो ट्रांसफॉर्मेशन तो हो ही रहा है ना, ठीक है। ये मॉडर्न डे का है ना, राइट। अरे कहाँ गया क्वेश्चन, 9th एक्सेप्ट, ठीक है ना, पर ये पुराने ज़माने में तो नहीं था। हाँ, करेंसी सिस्टम की जब तुम बात करते हो तो डिफरेंट मोड्स ऑफ पेमेंट्स की बात हो रही है, ठीक है ना। पेमेंट्स की भी बात हो रही है, इसमें जो आप करेंसी यूज़ कर रहे हैं उसकी भी बात हो रही है। तो ये पूरा पेमेंट सिस्टम अंडरगोइंग ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है तरुण? अंडरस्टैंड, हम करेंसी की नहीं, करेंसी सिस्टम की बात कर रहे हैं। It includes currencies, modes of payments, many other things, ठीक है। बट अंडरगोइंग ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है तो मॉडर्न करेंसी सिस्टम की ही बात हो रही है, ठीक है ना, जो मॉडर्न डे ज़माने में है पर पुराने ज़माने में नहीं था, ठीक है। ये क्लियर है? एटलीस्ट टैंक के साथ तो नहीं था, पुराने ज़माने तो नहीं बोलना चाहिए, टैंक के साथ तो नहीं था, टैंक डायनेस्टी के साथ नहीं था। ये पॉइंट क्लियर है? समझ में आया? नहीं आया? आया? ठीक है, क्लियर है तरुण? अदर्स? सी सर टाइपिंग एरर। अरे सिद्धार्थ, पहले आंसर तुम्हारा सही था, है ना, ठीक है। क्या करें, एक और करें, एक और करें? क्या बोलती है पब्लिक, एक और करें क्या? चलो एक और करते हैं, वोकैबुलरी। ज़रा ग्रुप से जो है आप PDF डाउनलोड कीजिए, है ना, ये चीज़ है। अनअकैडमी इज़ अ फैंटास्टिक प्लेटफॉर्म पीपल, है ना, बड़ी इंडिपेंडेंस है यहाँ पे, है ना, और जो है फ्लेक्सिबिलिटी है, आप किसी से भी पढ़ सकते हैं, है ना। फैंटास्टिक प्लेटफॉर्म है। टीचर्स हैव द फ्लेक्सिबिलिटी टू कंडक्ट द कोर्स द वे दे फील इज सुटेबल, है ना। आई काइंड ऑफ टॉट क्रिटिकल रीजनिंग इन 12 क्लासेस, RC जो है करीब 12 to 14 क्लासेस, पूरा ज़बरदस्त तरीके से स्ट्रॉन्ग, है ना। तो इस तरह से आई एम टीचिंग एंड इट्स सो चीप अनअकैडमी एज कम्पेयर टू अदर प्लेटफॉर्म्स। 70-80,000 एक साल का दे रहे हो, यहाँ पर 2 साल की फीस जो है आइकॉनिक में है वो भी 60,000, प्लस वाले तो और भी सस्ते हैं, ठीक है। सो पीपल थिंक अबाउट टेकिंग अप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, है ना। यूज़ द कोड, 10% डिस्काउंट भी मिलेगा, है ना, राइट। एक बार एक्सप्लोर तो करो यार, ज़्यादा नहीं तो ठीक है, आ जाओ 2 महीने 3 महीने का सब्सक्रिप्शन लेके आ जाओ प्लेटफॉर्म पे, टेस्ट कर लो, खुद ही तुम्हें फ़ायदा पता चल जाएगा। द बेस्ट पार्ट इज तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आराम से घर में बैठे हैं, है ना, पढ़ रहे हैं। सो आफ्टर कॉलेज और ऑफिस यू आर कम्यूटिंग टू अ सेंटर टू स्टडी, देन यू आर रिटर्निंग होम, है ना। तो मतलब समझ जाओ कि 2 से 3 घंटे तो यहाँ निकल ही जाते हैं। फिर तुम सेल्फ स्टडी कब करोगे, क्या करोगे, है ना। कॉलेज और जॉब के साथ आराम से बैठे हैं और प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। और इंस्टेंटेनियसली डाउट वगैरह भी पूछ रहे हैं, आपको आंसर्स भी मिल रहे हैं। चलिए फोक्स, ये वाले पैसेज को करते हैं। बहुत प्यारा सा पैसेज है। कल फिर इसी टाइम पे मिलेंगे 9 बजे, 9 o'clock, एंड वी विल प्रैक्टिस पैरा बेस्ड क्वेश्चन। फिर उसके अगले दिन मिलेंगे, वी विल प्रैक्टिस RC।
You make RC easy zar. Okay, Tasneem. चलो इस पैराग्राफ को समझते हैं people. Then we go about attempting. Vocabulary used in speech or writing organizes itself in 7 parts of speech. 8 if you count interjections as oh and gosh and forget about what जो भी है. Communication composed of these parts of speech must be organized by rules of grammar upon which we agree. When these rules break down, confusion and misunderstanding result. है ना? देखो rules of grammar कितना important है communication के लिए, whether it's writing, reading, anything, you know. Bad grammar produces bad sentences. My favorite example from Strunk and White is this one. As a mother of 5 with another one on the way, my ironing board is always up. People, before we move forward, can somebody tell me कि sentence में problem क्या है? ये जो स्ट्रंक एंड वाइट का जो एग्जाम्पल ऑथर ने दिया है, इसमें प्रॉब्लम क्या है सेंटेंस में? एनीवन? इस सेंटेंस में प्रॉब्लम क्या है पीपल? व्हाट डू यू थिंक? कॉमा? ना कॉमा नहीं है. इट्स फाइन. एनीवन एल्स? लॉल. ओके. एनीवन एल्स? क्या मिस्टेक है इसमें? देखो, as a mother of 5 with another one on the way, this becomes a participle phrase, है ना? प्रेजेंट पार्टिसिपल वगैरह पढ़ाया था तरुण पहले, याद नहीं है. नो सिद्धार्थ, ये एक एडजेक्टिव पार्टिसिपल फ्रेज है ना? और ये एडजेक्टिव पार्टिसिपल फ्रेज क्या कर रहा है? ये एक नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है. तो ये माई आयरनिंग बोर्ड को डिस्क्राइब कर रहा है. सो एज अ मदर ऑफ 5, कौन है मदर ऑफ 5? विद अनदर वन ऑन द वे, मतलब शी इज गोइंग टू बी अ मदर ऑफ 6. सो एज अ मदर ऑफ 6 मे बी, हु इज द मदर ऑफ 6 हियर? माई आयरनिंग बोर्ड इज ऑलवेज अप, है ना? राइट. सो आयरनिंग बोर्ड इज द मदर ऑफ 5 एंड द आयरनिंग बोर्ड इज गोइंग टू हैव अनदर चाइल्ड एज वेल, है ना? That is what the sentence essentially means. So maybe the lady wanted to say that since as I am a mother of 5 and another one is on the way, therefore my ironing board, or therefore लगाने की जरूरत नहीं है, sorry, as तो लगी गया. So my ironing board is always up, है ना? So ये चीज़ है. ठीक है. As I am a mother of 5, I am होना चाहिए था यहाँ पर, if you talk about the grammatical corrections. ठीक है. So basically it means that bad grammar creates a lot of confusion, है ना? And है ना? Bad sentences. That's what this paragraph is talking about. Nouns and verbs are the two indispensable, है ना, parts of writing. They are the most important, indispensable. Without one of each, no group of words can be a sentence. Since a sentence is by definition a group of words containing a subject noun and predicate verb, these strings of words begin with a capital letter. ठीक है? End with a period and combine to make a complete thought which starts in the writer's head and then leaps to the readers, है ना? So nouns and verbs are the most important. They combine with others, है ना? तो पहले राइटर के दिमाग में जो है वो थॉट बन के आती है, फिर धीरे धीरे क्या होता है, जब रीडर उस सेंटेंस को पढ़ता है तो फिर रीडर के थॉट में भी, रीडर के हेड में भी फिर वो थॉट लीप इन कर जाता है. ठीक है. Must you write complete sentences each time, every time? Perish the thought, है ना? क्या तुम्हें हमेशा एक सही सेंटेंस लिखने की जरूरत है? Perish that thought. That's what it is saying. If your work consists only of fragments and floating clauses, the grammar police aren't going to come and take you away, है ना?
if your work consists only of fragments and floating clauses, है ना, कहीं भी floating clauses मतलब कहीं भी कोई clause डाल दिया, है ना, grammar police is not going to come and take you away. Even William Strunk, है ना, that Mussolini of rhetoric recognized the delicious pliability of language, flexibility of language, है ना. Mussolini of rhetoric means rhetoric is sometimes you're repeating the same, है ना, ठीक है, and it's kind of understood कि ऐसा ही होना चाहिए. But even William Strunk kind of believed that language can have the necessary flexibility, है ना. It is an old observation, he writes, that the best writers sometimes disregard the rules of rhetoric, है ना. Yet he goes on to add this thought, which I urge you to consider. Unless he is certainly certain of doing well, the writer will probably do best to follow the rules. मतलब क्या, जब तक कि वो फेमस राइटर नहीं हो गया, सक्सेसफुल राइटर नहीं हो गया, तो भैया ग्रामेटिकल रूल्स को, है ना, ब्रेक मत करो, ठीक है, उसको फॉलो करो, follow the rules. That's essentially what this paragraph is saying. So basically you don't have to write a correct sentence every time, but unless and until you are a famous writer, don't try and break the rules, है ना. And creative writing में बहुत बार जो है rules break होते हैं, है ना. So the telling clause here is unless he is certain of doing well, है ना. So the telling clause is unless he is certain of doing well. Perhaps he said commas के अंदर होता, है ना, unless he is certain of doing well. So if you don't have a rudimentary, which means basic, grasp of how the parts of speech translate into coherent sentences, how can you be certain that you are doing well? Interesting, है ना. How will you know if you are doing ill, for that matter, है ना. The answer, of course, is that you can't and you won't. तुम्हें नहीं पता चलेगा, you won't. One who does grasp the rudiments of grammar finds a comfort, simplicity at its heart, where there needs to be only nouns, the words that name, and verbs, the words that act, है ना, ठीक है. तो basically just, you know, have grasped the basics of grammar and just use it, है ना. I find comfort in this particular case, ठीक है. Take any noun, put it with any verb, and you have a sentence. It never fails. कभी fail नहीं करेगा. Rocks explode. Jane transmits some kind of radiation or something. Mountains float, है ना. At least भैया चलो meaning some मतलब clear नहीं in sentences में, but at least these sentences are absolutely correct, है ना. These are all perfect sentences. Many such thoughts, you know, make little rationale or sense, but even the stranger ones, like Plum's deify, have a kind of poetic weight. That's nice. So as long as, even if the sentences don't make sense, as long as you are grammatically correct, that's perfectly fine according to what this writer is trying to say. And that is why you kind of see there are so many grammar Nazis who have a perfectly good grammar, but they don't have any creative instincts when it comes to writing well, है ना. But then that's fine, है ना. That's what the author is saying. So I'm just going to kind of understand what the author is saying, not going to debate with the author. The simplicity of noun verb construction is useful. At the very least, it can provide a safety net for your writing, है ना. Strunk and White caution against too many simple sentences in a row, but simple sentences provide a path you can follow when you fear getting lost in the tangles of rhetoric. All those restrictive and non-restrictive clauses, है ना, those modifying phrases, those appositives and compound complex sentences, है ना, ठीक है. So that's what it is trying to say. But simple sentences बनाओ तो तुम कभी भी confuse नहीं होगे और sentences गलत नहीं होंगे. So if you start to freak out at the sight of such unmapped territory, unmapped by you at least, just remind yourself that rocks explode, Jane transmits, mountains float, and plums deify. Grammar is the pole you grab to get your thoughts up on the feet and walking, है ना. If you start to freak out at the sight of such unmapped territory मतलब ये restrictive non-restrictive clauses क्या है भैया, दिमाग खराब हो रहा है. Those modifying phrases क्या होता है, ये complex sentences क्या है, ये तो जहाँ तुम्हें समझ ये दिक्कत आ जाए, just so what is the purpose of mentioning this line? Just focus on these kind of simple sentences. Rocks explode, Jane transmits, mountains float, है ना. That's what this particular paragraph is trying to say. ठीक है, समझ में आया. काफ़ी easy passage था, not difficult, है ना. But
सेशन 2 में, स्लॉट 2 में, स्लॉट 3 में सडनली द नेचर ऑफ द पैसेजेस चेंज, दे बिकेम क्वाइट टफ, है ना. So question number 10 says which one of the following statement, if false, could be seen as supporting the argument in the passage. ठीक है. How will you solve this question? Anyone? Can you just tell me how will you go about solving this kind of a question? कैसे solve करोगे इसको? How will you solve this kind of a question? कैसे solve करोगे बाबा? कैसे सॉल्व करोगे? एनीवन, कैसे सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को? हाउ शुड वी परसीव दिस क्वेश्चन? नाइस, यू मीन नाइस, नाइस. अच्छा, how will you solve this question, everybody? देखो, which one of the following statements, if false, could be seen as supporting the argument in the passage? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? डबल नेगेटिव. नहीं, डबल नेगेटिव नहीं है गगनेश, इट्स नॉट डबल नेगेटिव. अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे ए स्टेटमेंट अगर फॉल्स होगा तो वो पैसेज को सपोर्ट कर रहा होगा. तो अगर ट्रू होगा तो डज नॉट सपोर्ट द पैसेज. डज नॉट सपोर्ट का पैसेज का मतलब क्या है? या तो वो वीकन करेगा या फिर न्यूट्रल हो सकता है, कोई इंपैक्ट है ही नहीं. ठीक है ना. डज नॉट सपोर्ट का मतलब ये है, ए फॉल्स कुड बी सीन एज सपोर्टिंग. अगर ये फॉल्स होगा तो हमें देखना है. तो ये क्या आंसर हो सकता है, आप सोचो जरा. अच्छा, गगनेश, यू गिवन द आंसर एज वेल. फैंटास्टिक. व्हाट अबाउट अदर्स? आंसर क्या हो सकता है? सो एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्रामर हेल्प्स अ राइटर डिसाइड इफ ही इज राइटिंग वेल और नॉट. ठीक है. सो एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्रामर हेल्प्स अ राइटर डिसाइड इफ ही इज राइटिंग वेल और नॉट, है ना. तो ये तो सपोर्ट कर रहा है. हमें क्या है, अगर ये ट्रू है डज नॉट सपोर्ट करेगा, है ना. ठीक है. तो डज नॉट सपोर्ट हमें ढूंढना है. तो ए तो सपोर्ट कर रहा है. बी कह रहा है रिगार्डिंग ग्रामर, women writers tend to be more attentive to method and accuracy, है ना. ये जेंडर डिफरेंस कहाँ दिया है पैसेज में? नहीं दिया है ना. तो चाहे ये ट्रू भी हो या फॉल्स भी हो, तो पैसेज में जब इसके बारे में बात हुई नहीं है तो उसको सपोर्ट कैसे कर सकता है? तो भी आंसर नहीं हो सकता इसमें. It has been observed that writers sometimes disregard the rules of rhetoric. ठीक है. ये भी जो है पैसेज के इंफॉर्मेशन को सपोर्ट कर रहा है. स्पेशली फेमस राइटर्स डू दिस. Perish the thought that complete sentences necessarily need nouns and verbs. ठीक है ना. Perish the thought that complete sentences necessarily need nouns and verbs, है ना. ठीक है. And passage has said कि nouns and verbs की जरूरी है. तो बेस्ट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? डी, है ना. अब ऑथर ने यहाँ कहा ना कि nouns and verbs इसकी नेसेसरी है ना. ठीक है. इट नेवर फेल्स. तो ये सेंटेंस कर रहा है कि भैया ये थॉट को पेरिश कर लो, है ना, कि नेसेसरी है. तो ये वीकन कर रहा है, अटैक कर रहा है ऑथर के व्यू पॉइंट को, वीकन कर रहा है. तो ये हमारा आंसर हो जाएगा. ठीक है. बिल्कुल सही तरुण सिद्धार्थ, है ना. 11th, take any noun, put it with any verb and you have a sentence. It never fails. Rocks explode, Jane transmits, mountains float. None of the following statements can be seen as similar except. मतलब जो सेंटेंसेस ऊपर में ये जो गिवन सेंटेंस हैं इसके सिमिलर, जो सेंटेंसेस सिमिलर नहीं हैं वो आंसर नहीं होगा, जो सिमिलर है वो आंसर होगा. क्वाइट एन इंटरेस्टिंग टेक. ठीक है. क्वाइट एन इंटरेस्टिंग टेक, है ना. None of the following statements can be seen as similar. मतलब इसमें से कोई भी सेंटेंस ऐसा नहीं है जो इसके सिमिलर है, एक्सेप्ट मतलब तुम्हें वो सेंटेंस देखना है जो इसके सिमिलर है. ठीक है. तो इसने क्या कहा, ऐसा है
नाउन को लो, वर्ब के साथ जोड़ दो, तुमको जो है सेंटेंस मिल जाएगा। भाई कभी ये फेल नहीं करता है ना। जैसे रॉक एक्सप्लोड हो गया, जेन ट्रांसमिट हो गया, माउंटेन्स फ्लोट हो गए, है ना। तुमने दो चीज़ें जोड़ी, तुम्हें एक चीज़ मिल गया। लाइक टेक एनी वेजिटेबल, उसमें क्या थोड़ा मसाला वसाला डाल दो, स्पाइसेस, एंड यू हैव अ डिश, ठीक है। एंड टेक एन एप्पल ट्री, प्लांट इट इन द फील्ड एंड यू हैव एन ऑर्चर्ड। अ ग्रुप ऑफ नाउन्स अरेंज्ड इन अ रो बिकम अ सेंटेंस। अ कलेक्शन ऑफ पीपल विद द सेम स्पोर्ट्स इक्विपमेंट इज अ स्पोर्ट्स टीम। अब ज़रा बताओ इसमें कौन सा आंसर होगा। इतना एक्सप्लेन कर दिया, इतना हिंट दे दिया। क्या हो सकता है आंसर इसमें 11 में? एवरीबॉडी, अब तक तो आंसर आ जाना चाहिए था बाबा। क्या कर रहे हो? गगनेश सी, अभय ए, तरुण सी, अभय, अरे भाई अभय एक बार टाइप कर दिया यार। इशिता ए, सिद्धार्थ ए, अभय ए, अरे भाई अभय एक बार टाइप कर दो यार, थोड़ा लैग होता है सिस्टम में, बार बार टाइप करने की जरूरत नहीं है माय डियर, है ना। ठीक है, ओके, गॉट इट। तो ऐसा है ना, एक चीज को लो, दूसरी चीज को लो, तुम्हारे पास एक मतलब जो है एक शानदार सी चीज मिल गई, है ना। सी कह रहा है ग्रुप ऑफ नाउन्स जिसमें अरेंज करने की बात हो रही है। तुम दो चीजों को जोड़ नहीं रहे हो, अरेंज करने की बात हो रही है ना। ठीक है, तो आंसर इसमें ए हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ ना थोड़ा सा चैट कभी कभी लेट आता है, कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि पहली बार आ रहे होंगे तो कोई बात नहीं, है ना। आंसर है तो यस, अभय, सिद्धार्थ, इशिता, आंसर सही है। तरुण एंड गगनेश आई थिंक क्लियर है। लैग कर रहा था फोन, आई नो, कोई बात नहीं। 12, ठीक है ना, जेन्युइन मिस्टेक पता चल जाता है नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोट्स बेस्ट कैप्चर्स द मेन कंसर्न ऑफ द पैसेज? कौन सा कोट? स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। क्या आंसर होगा इसमें? क्या आंसर होगा इसमें? व्हाट डू यू थिंक फोक्स? क्या आंसर होगा इसमें? ओके, अब है गगनेश। Nouns and verbs are the two indispensable part of writing. Without one of each, no group of words can be a sentence. Nouns and verbs author के passage के context से सोचो। गगनेश, तरुण, okay, Siddharth, what about you? Ishita, what about you? अरे बाबा, दिस इज जस्ट वन पार्ट ऑफ इट। नाउन्स एंड वर्ब्स आर इंपॉर्टेंट। दैट ऑथर इज सेइंग कि भाई कुछ भी हो, सबसे सिंपल सेंटेंस में बना दो, नाउन और वर्ब को जोड़ दो, है ना, राइट। दिस इज जस्ट वन पार्ट ऑफ इट। अल्टीमेटली द ऑथर वांट्स टू हाईलाइट एज बी, बैड ग्रामर प्रोड्यूसेस बैड सेंटेंसेस, है ना। आंसर इज बी इन दिस केस। ठीक है, थर्टीन एवरीबॉडी। बस इसके बाद एक और क्वेश्चन है पीपल, वी आर डन फॉर द डे। 13 एवरीबॉडी। All the following statements can be inferred from the passage except, so the one which cannot be inferred, the one which is not true based on the passage. Not true क्या होगा? या तो उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, या तो वो पैसेज में दिया ही नहीं है। Okay, Tarun says C. What about others? क्या आंसर हो सकता है इसमें?
The primary purpose of grammar is to ensure that sentences remain simple. Primary purpose नहीं, author is just advise कि भाई you should write simple sentences, but grammar का primary purpose ये नहीं है. Grammar police is a metaphor for critics who focus on linguistic rules. No, grammar police वगैरह ये सब concept के बारे में बात ही नहीं हुई इसमें, है ना. तो डी तो दिया ही नहीं है ना, तो डी आंसर नहीं होगा, आंसर इज सी. ठीक है, ठीक है. लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे पीपल, 14. क्या आंसर होगा इसमें? इन्फरिंग फ्रॉम द पैसेज द ऑथर कुड बी मोस्ट सपोर्टिव ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस. मतलब कौन से ऑप्शन को जो है ये सपोर्ट करेगा पैसेज, है ना. ये आपका कंक्लूजन का क्वेश्चन है. वंस अगेन अनदर क्रिटिकल रीजनिंग क्वेश्चन. तो क्या आंसर होगा इसमें? Practices. The critique of standardized rules of punctuation. अच्छा, अगर तुमने चेंज कर दिया आंसर. What about others? आंसर क्या होगा इसमें? Simple है यार, everybody, come on. Answer is A. बेसिकली दी ऑथर इज सेइंग कि भैया सही ग्रामर लिखने की जरूरत है, उसके लिए अगर तुम एक सॉफ्टवेयर यूज करते हो तो अच्छी बात है. सो पैसेज इसको सपोर्ट करेगा. क्रिटिक ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड रूल्स को इसको क्यों ऑथर सपोर्ट करेगा कि somebody who is criticizing standard rules of punctuation and capitalization. ये तो गलत है. ठीक है. नो इशिता, दिस इज रॉन्ग. ठीक है ना. A creative writing course that focuses on how to avoid the rhetoric. No, the author says avoid the rhetoric if you're a famous writer. Otherwise, don't. And उसमें भी avoiding मतलब you can take liberty. That's essentially what the author is saying. A campaign demanding that the writer's creative license. ये तो बिल्कुल ही गलत आंसर है ना. हाँ, no misunderstandings. Answer is A in this case. ठीक है. मजा आया, कुछ सीखने को मिला. CAT 20 के पैसेजेस थे ये पीपल, है ना. तो ये चीज है, राइट. तो आप लोग आइए अनअकैडमी पे, है ना. अगर इफ यू नो समबडी, उनको भी भेजिए ज़रा, है ना, जो CAT 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना. राइट. फैंटास्टिक पीपल आर हियर पीपल, एंड वी विल वर्क टुवर्ड्स ट्रांसफॉर्मिंग योर परफॉर्मेंस इन VARC, है ना. तो ये सब बैचेस अवेलेबल हैं पीपल, ये कोर्सेज हैं. CAT 2022 के बैचेस भी चालू हो गए हैं, ज्वाइन करो. कुछ और भी बैचेस ये चालू हुए हैं, है ना, ऑफ लेट. इनको भी बैच ज्वाइन करने के बारे में सोच सकते हो, है ना. तो ये चीज़ है ना. ये ठीक है. That's all folks, है ना. Follow me on Unacademy and join the group, right. तो ये चीज़ है. Any questions? Any questions till now? Any questions till here? Any questions till here before we call it a day? Just waiting for 30 seconds till the lag is over. नहीं, हाँ. See you tomorrow, Tarun. Good night. Good night, Siddharth. India beaten by Pak. तब ना, अरे लोगों के अंदर जोश कैसे आएगा कि क्रिकेट देखना है ना. यार गेम में कोई इंटरेस्ट तो नहीं रहता है, टीम में इंटरेस्ट होता है कि जीतेगा या हारेगा. तो लोगों का पैशन वो करना ज़रूरी है ना, राइट. तो ये चीज़ है. चलो, ओके इशिता, यस, गुड नाइट. चलो, कोहली हरा दिया, ओहो. चलो 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 चलो, ठीक है. बेचारे विराट कोहली को. हाँ, ओके एवरीबॉडी.